the scooter. This is a performance scooter. You guys are familiar with N-Torque in this market. Everybody loves N-Torque here. This is in that same space of performance scooter. And that's Rista, which is the family scooter. I'll talk more about them as we go along. So 450 was the first product, and this came at a backdrop many years back when electric scooters were considered to be like a compromise. I don't know if you were tracking the market that time, but 6 years back, if you thought of electric scooter, you thought of scooters that didn't go beyond 25, 30, 35 kilometers per hour. You thought of scooters that were bad build quality. You thought of scooters which had no acceleration. You thought of scooters where if two people sat down, it would not climb a flyover. Really, they were cheap Chinese imports at that point in time. That was the market that time, right? And then he came in, he said, we have to change the perception. People think electric is a compromise. Electric is exactly the opposite of compromise. It is the best technology today in automotive. So we introduced this one, the 450, which at that point in time was the quickest scooter in the market, 0 to 40, high acceleration, high torque, high top speed, great balance. And if you look at the scooter, it is inspired from sports bikes. Whether you look at things like the form itself, which is slim, aerodynamic, great for performance scooters, zero lag throttle. So the moment you twist the throttle, it runs. The response of throttle is faster than your eye can blink in terms of the microseconds, right? Aluminum chassis, first scooter, until today the only scooter in the country to have an aluminum chassis. As you're aware, aluminum is used only in sports bikes, low center of gravity, great distribution. Essentially, things you would consider in a sports bike were there in a scooter, which is why it has been such an amazing success. It redefined what scooters are, it redefined what electric is, and this has still date a benchmark for performance and quality in the country. It has a variety of things. I'm not going to talk about a lot of detail. We can talk about that separately when you look at the product. But things like traction control, which we introduced recently. Now, you would realize, especially in a market like this, where you have rain, you have slippery roads, you may have hilly terrain. So this has multi-mode traction control for 3 different use cases: rain, road, and 90% average capacity is 6 साल के बाद. So, which is a good indicator की quality क्या है. बाकी आप build quality देख लीजिए, बाकी आप reliability देख लीजिए, बाकी आप हमारे reviews देख लीजिए. तो एक तो quality का difference है. दूसरा है experience का difference है in terms of features. आपको जैसे बताया मैंने कि बोलने के लिए बहुत लोगों के पास बहुत फीचर होते हैं, लेकिन उसमें जो आपका यूजेबल फीचर क्या है. जैसे आपको एग्जांपल दिया ऑटो होल्ड का. ऑटो होल्ड किसी के पास भी हो सकता है, लेकिन अगर 1 मिनट में आपका स्कूटर वापस चलना शुरू हो जाएगा तो वो नाम का फीचर है, वो काम का नहीं है. तो दूसरा तो है जो फीचर्स होते हैं. तीसरा जो है जो हमारी जो थिंग्स लाइक वारंटी, जो इतनी स्ट्रिंजेंट वारंटी है, जो 70% बोल रहे हैं 8 साल के बाद हुई, वो है. और उसके अलावा जो हमारे कनेक्टिविटी फीचर्स हैं, जैसे ऑटो होल्ड है, थ्रेप डिटेक्शन है, ओवर द एयर अपडेट्स हैं, रिमोट डायग्नोस्टिक्स है, ऐसे बहुत फीचर हैं हमारे जो हमारे सॉफ्टवेयर ड्रिवन है, जो बहुत लोगों के पास नहीं है. कनेक्टिविटी हो सकती है, लेकिन वो क्वालिटी जो फीचर जो है, आपको मैंने एक वो दिखाया था, एक लिस्ट थी, वो ये लिस्ट तो है जो अभी है वो है. तो क्वालिटी देख लीजिए, रिलायबिलिटी देख लीजिए, वारंटी देख लीजिए, डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट लाइन. टिपिकली क्या होता है कि एज ऑफ नाउ एक प्रोडक्ट है, उसके अलग अलग बैटरी वेरिएंट्स हैं. लेकिन अगर आप वहाँ देखें, अगर आप देखते हैं, जैसे आइस वर्ल्ड में देखते हैं, आप टीवी देख लीजिए आइस एज एन एग्जाम्पल, राइट. उनका एक जुपिटर है जो फैमिली के लिए, एक एंटॉर्क है. क्यों अलग क्यों है? क्योंकि रिक्वायरमेंट अलग है, कस्टमर अलग है. ईवी में क्यों नहीं है? वो भी होना चाहिए. लॉजिक तो वही है, कस्टमर तो वही है. तो हमारे प्रोडक्ट लाइन है जो फैमिली के लिए ऑप्टिमाइज है, परफॉर्मेंस के लिए ऑप्टिमाइज है. सो हमने एक कस्टमर के हिसाब से बनाया है. तो एक डेप्थ ऑफ थिंकिंग है इसमें है कि आपको जिसके लिए जो चाहिए उसके लिए वो बनाया है. और जो डेप्थ ऑफ फीचर है, क्वालिटी है, जो हमारा इन्वेस्टमेंट R&D में है, इस चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हम बोलते हैं कि हमारा सबसे बड़ा है. बाकी बात तो है ही नहीं किसी के पास. ऑलरेडी 4000 है और अभी और लगा रहे हैं. हम क्यों लगा रहे हैं? इसमें हमारे चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पैसे नहीं बनते. वी लूज मनी इन दैट. और उसमें काफ़ी साल तक पैसे बनने की उम्मीद भी नहीं है, लेकिन फिर भी कर रहे हैं बिकॉज कस्टमर का जरूरी है. एज अ रिस्पॉन्सिबल हो है मेरे Ather 450 with multi-mode traction control. Ather 450, the bike of scooters. When you talk about performance scooters, people assume incorrectly
that you give high top speed, it becomes performance. No, that's not true. Anybody can put a big motor and give you high top speed. That does not make a vehicle a performance vehicle. You have to have top speed for sure. Acceleration, yes, but balance, planting, center of gravity, front, back, weight distribution, things like traction control, that's what makes it performance. Just top speed actually makes it dangerous because you've given speed, but you have not given the supporting mechanisms that allow you to be at high speed and still be stable and safe, right? So this is what 450 was. Weight distribution front and back is 4951, which is like sports bike, low center of gravity, great banking. You can ride it like a motorbike, which is why we call it the bike of scooters. So this redefined what performance was, and then as we went along, we added more features. For example, we have the magic twist. Magic twist is, if you look at your accelerator, you do like that, it goes fast. What magic twist does is if you go opposite, it becomes slow. It's like a brake. Now it is very intuitive. Think of the devices you have in your house. Fan, gas, volume button. One way it goes up, one way it comes down. That's what intuitive design is all about. But for whatever reason, scooters have this thing, acceleration alpha, brake accelerating, right? What we tried to do here was replicate a very intuitive experience where if you go like this, it goes fast. If you go opposite, it goes slow. You can stop it. You can, technically, if you physically break the brake, you still be fine. Very successful IPO to hit the market, first one in this year. So it's been a journey starting off from a small bungalow in Bangalore to a large organization today, 2,500 people, one factory running, another factory coming up, in a couple of hundred, about 250 cities we are present, over 400 experience centers. So, from a very small operation today, a very large business. Importantly, pioneering a lot of stuff that you see in the market today was pioneered by Ather. And I'll talk about a variety of things today that you see in scooters that were first introduced by us, right? So it's a scooter which is designed and made in India. Became fashionable, everybody spoke about it because we believed that if you have to make a product for India, you have to think India. You can't import and then change a bit and start selling because India is different, the roads are different, climate is different, environment is different. In case of electric scooters, the grid conditions are different when you charge the scooter. So you have to design for Indian road conditions and Indian requirements. So you can't import from China, Europe, somewhere, rebadge it and sell it. Shreya, can you just take this for us? So we essentially designed the product and importantly also designed the supply chain. Bear in mind, when we started many years back, there was no supply chain. So if you're an electric vehicle producer, you couldn't go and say, "Arey, motor kharid lete hain." There was nobody selling motors, nobody selling cells, nobody selling electronics, nobody selling semiconductors, nobody selling chips. So how do you create a product when there is no supplier ecosystem? So you have to create that ecosystem. So that's one of the things that we did. Next slide. Changing the slide, I'll just, we have two products. Once you're done, you can have a look at the products in person here. The Ather 450, which is the first product that we launched in 2018, and Ather Vista, which we launched last. नया स्कूटी नहीं है, हम यहाँ पे आए हैं बिकॉज हमने यहाँ पे एक नया एक्सपीरियंस सेंटर खोला है गुवाहाटी में और आगे 5 और खोल रहे हैं असम में और नॉर्थ ईस्ट में ओवरऑल ज़्यादा बढ़ रहे हैं. तो इसलिए हम यहाँ पे आए क्योंकि यहाँ पे हम चाहते हैं कि यहाँ पे भी ईवी का अडॉप्शन है वो एक्सेलरेट हो, वो बढ़े वहाँ पे. और हम जानते हैं कि अगर उसको बढ़ाना है तो जैसे Ather OEM में हमें आके यहाँ पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जो हम कर रहे हैं यहाँ पे, चाहे स्टोर में है, चाहे सर्विस में है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर में है. तो आज यहाँ पे आए जस्ट टू शो आवर कमिटमेंट टू द नॉर्थ ईस्ट. तो दो मॉडल है हमारा, एक 1,12,000 है और 1,30,000 के आसपास है. द विस्टा इज 1,12,000, तो 50 और 120 के आसपास है. एग्जैक्ट इसमें क्या है किस वाले में? ये स्कूटी में एक जो Ather 450 है वो परफॉर्मेंस स्कूटर है. तो उसमें है एक्सेलरेशन, टॉप स्पीड, बैलेंस, हैंडलिंग एक्सेट्रा, लो सेंटर ग्रेविटी, विच इज़ मोर फॉर द परफॉर्मेंस ऑडियंस. दूसरा है Ather Vista जो है, Vista है फैमिली ऑडियंस के लिए. जो फैमिली ऑडियंस है उनको और कुछ चाहिए, उनको सेफ्टी चाहिए, उनको स्पेस चाहिए, स्टोरेज चाहिए, बड़ी सीट चाहिए, ट्रैक्शन कंट्रोल है, स्किड कंट्रोल है, फैमिली की सेफ्टी के लिए. तो दो अलग प्रोडक्ट हैं, अलग अलग यूज केस हैं, अलग अलग रिक्वायरमेंट हैं, अलग अलग फीचर हैं.